जी, वेल हम बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, क्योंकि इससे पहले 3 फिल्में रिलीज़ हुई मिली और इट्स ऑल बिन बिग हिट्स है। और जो एक्चुअली फिल्म से ज़्यादा जो एक रिस्पॉन्स मिला था मुझे एयरपोर्ट पे और फिल्म प्रीमियर के वक्त भी, वेरी वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, बहुत पॉजिटिव। लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे वहाँ और मैं जाके मिलना चाहता था और दे रियली मेक यू फील वेलकम देयर, बहुत ही एक वार्म वेलकम। और ऐसा लगता भी नहीं है कि आप इंडिया से बाहर जाके कहेंगे, एक अपना सा माहौल है वहाँ पे। आई थिंक इट्स थैंक्स टू द पीपल देयर। और ये हमारी यही एक इच्छा थी कि और गोल था कि ये हमारी फिल्में रिलीज़ हों, वहाँ पाकिस्तानी टैलेंट जो अभी आ रहा है यहाँ पे और भी टैलेंट आए, तो दोनों देशों में कहीं ये जो गैप है उसको हम ब्रिज करना चाहते हैं। और दिस आई गेस द बेबी स्टेप्स, बट क्रिएटिवली मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई सीमा नहीं होती है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती है, और ये अभी कहीं मिट गई है और दोनों तरफ से काम लोग म्यूचुअल बेनिफिट, जैसे जन्नत भी एक को प्रोडक्शन है विद मिस्टर सोहेल खान जो वहाँ से हैं, तो आई थिंक दिस इज अ न्यू बिगनिंग। So particularly because it's a cricket related movie, आपको लगता है इसकी वजह से इतना अच्छा रिस्पांस मिला है? और it was वेल आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस तरह फिल्म शेप हुई है। हाँ, क्रिकेट का एक माहौल है कहीं, उसको लेकर भी फिल्म को एक बहुत अच्छी हाइप मिली है और म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आई थिंक प्रीतम ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है इस फिल्म में, तो आई थिंक इन सब चीज़ों को लेकर और कहीं मैं भी हूँ इस फिल्म में, तो थोड़ा क्रेडिट मुझे भी जाना चाहिए। आई थिंक मोस्टली जो क्रेडिट जाना चाहिए तो मेकर्स, भट्ट साहब ने जिस तरह की कहानी लिखी है, विशेष ने भी जो नए कमर हैं कंपनी में, उन्होंने जो लिखी जो आइडिया दिया था, केडी कुणाल देशमुख ने जो डायरेक्ट की है, परफॉर्मेंस सोनल, सो आई थिंक एवरीवन, it's teamwork and it's shaped up well. IPL भी peak पर है इस पर, so I think because of that also it's got that hype. Yeah, definitely. I think it's a reflection of our times. जो क्रिकेट का जो माहौल है, क्रिकेट और ये जो कैरेक्टर है जो he wants to make the quick buck, और what better way कि वो क्रिकेट बुकी बने, and it explores a new world, so it's new about the film. The music is already a chart buster, Yeah. so do you think it's an added advantage to it? Of course, music has worked in a big way. All the tracks, I think Zara Sa, Judai, Emraan from Pakistan has sung it, and I think Pritham has done a fabulous job. I think after Gangster, I always tell him this is his best album so far, and it's very unfair to compare all his albums. Actually, he's done a great job in every album, but he's really done a great job. I think also it's clear indication that after 2 weeks of releasing the film's music, it's done so well. It reached the #1 position. So people are loving it, and I'm sure they'll love it even more after they see the film, because it's situational, the songs, and great moments in the film. Yeah. Final question, सोनल का आज बर्थडे है, वो इसको एक परफेक्ट गिफ्ट मान रहे हैं उनके बर्थडे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सुपर हिट फिल्म दूंगा उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए। जी, थैंक यू। Thank you. Yeah. Oh, I love it. I got sick of the early image. I thought I'll break it, and now I'm fixing matches in this, which is very exciting because I think no one else has played a bookie as yet in screen. So it's a new experience. Shaped up well. What is your relationship with your co-stars? Great. I always believe in a nice cordial relationship. It's, everyone, young team, everyone goes out there to make a great set out of it. Are you tracking on the IPL? Not much. No. So if you were a fixer, who would you have your money on right now? I right now, if I Reason to watch this film? one reason, lot of reasons, but I think it's a reflection of our time. This film, it's got a certain ideology and character. A fine job for a first film. She's really mature performance, character that. Sonal Kapoor's birthday coming.